Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. First recite the words of knowledge with me. Kul Rabbi zidni ilma. ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. O my Lord, increase my knowledge. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 1, Amin and the eggs. Let's start with the starter activity. Look at the pictures below. What will happen next? Draw or write your answer in the box beside each picture. इस सवाल में हमें क्या करना है? इस सवाल में हमें पिक्चर्स को देखकर प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. हम अपने आंसर को रिटन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. What did you see in it? Hen has laid the eggs. After the eggs are laid, what happens next? The eggs will hatch into chicks. So in the empty box, right beside the picture, please write, students. The eggs will hatch into chicks. The eggs will hatch into chicks. You can also draw your answer like this. Now let's look at the second picture. In the second picture, we can see that a man is sowing some seeds into the soil. What's going to be happen next, students? The seeds will grow into plants. Now write your answer in the box like this, or you can also draw your answer like this. Write answer. The seeds will grow into plants. The seeds will grow into plants. Good job, class. We are done with our first exercise. Let's move on the next one. Let's read this really interesting story together. Put your finger on book and read along with me on page number 11. Let's focus on difficult words in this paragraph. There are 2 difficult words in this paragraph. The first one is drought. Look at the small yellow box right beside the paragraph. Rhymes with doubt. A long period of time when there is no rain. Drought को उर्दू में खुश्क साली कहते हैं, मतलब जब बारिश नहीं होती. So when rain doesn't fall, crops do not grow and people do not have food to eat. The second difficult word is merchant. Merchant means trader और merchant को उर्दू में ताजर कहते हैं. Now put the fingers on book and read the story with me. Once upon a time, there was a man called Amin. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी था जिसका नाम अमीन था. He lost all his crops in a drought. वो खुश्क साली में अपनी सारी फसलें तबाह कर चुका था. Amin decided to look for work in another village and off he went on his donkey. अमीन ने फ़ैसला किया कि वो दूसरे गांव जाकर काम की तलाश करेगा. फिर वो अपने गधे पर सवार होकर चला गया. Before he left, he bought a dozen hard-boiled eggs from a merchant and promised to pay him later. जाने से पहले उसने एक ताजिर से दर्जन भर सख्त उबले हुए अंडे लिए और उससे वादा किया कि उन अंडों की अदायगी वो बाद में ज़रूर कर देगा. 7 years later, Amin returned to his village. 7 साल बाद अमीन अपने गांव वापस आया. He came on a fine black horse. वो एक अच्छे स्याह घोड़े पर आया. Behind him was a camel carrying bags full of gold and silver coins. उसके पीछे एक ऊँट था जो सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था. Amin was a rich man now. अब अमीन एक अमीर आदमी था. The news soon spread through the village. ये खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई. Soon the merchant who had given him the dozen boiled eggs knocked at Amin's door. जल्द ही उस ताजिर ने अमीन के दरवाजे पर दस्तक दी जिससे अमीन ने उबले हुए अंडे लिए थे. Pay back the debt you owe me, he said. ताजिर ने कहा, तुम पर जो मेरा कर्जा है वो वापस करो. Give me 500 silver coins for the eggs you bought.
जो तुमने मुझसे अंडे लिए थे उसके बदले मुझे 500 चांदी के सिक्के दो। अमीन रिफ्यूज टू पे सच अ लार्ज सम। अमीन ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया। सो द मर्चेंट टुक हिज कंप्लेंट टू द जज। तो ताजिर ने उसकी शिकायत जज से कर दी। देयर इज़ वन डिफ़िकल्ट वर्ड इन दिस पैराग्राफ, दैट इज़ डेप्थ। लुक एट द डेफिनेशन ऑफ डेप्थ इन अ येलो बॉक्स। राइम्स विद गेट, मनी दैट यू हैव बोरोड एंड यू हैव टू पे बैक। डेप्थ को उर्दू में उधार कहते हैं। द मर्चेंट अपीयर्ड इन कोर्ट बट देयर वॉज नो साइन ऑफ अमीन। ताजिर अदालत में हाजिर हुआ लेकिन अमीन का कोई पता नहीं था। द जज वेटेड एंड वेटेड, सडनली अमीन रश्ड इन आउट ऑफ ब्रेथ। जज इंतज़ार करता रहा कि अचानक अमीर फूली हुई सांस के साथ भागते हुए हाजिर हुआ। एट वंस द मर्चेंट सेड, माई लॉर्ड, 7 years ago दिस मैन टुक 12 eggs फ्रॉम मी। ताजिर ने कहा, मेरे आका, 7 साल पहले अमीन ने मुझसे 12 अंडे लिए थे। 12 eggs would have become 12 chickens। वो 12 अंडे 12 चूज़ों में बदल जाते। These chickens would have become hens and cocks। और फिर ये चूज़े मुर्गियों और मुर्गों में बदल जाते। The hens would have laid more eggs। फिर वो मुर्गियाँ मज़ीद अंडे देतीं। The eggs would have hatched into chickens। फिर उन अंडों में से और चूज़े निकलते। After 7 years, I would have had a large flock of birds। 7 साल बाद मेरे पास मुर्गियों का ग्रोह होता। Now Amin must pay me 500 silver coins for all the birds I have lost। अब अमीन को मुझे 500 चांदी के सिक्के देने चाहिए उन तमाम परिंदों यानी मुर्गियों के लिए जो मैंने खो दिए हैं। You are right, agreed the judge। आप सही हो, जज ने ताजिर की बात से इत्तफाक करते हुए कहा। He turned to Amin with an angry look and said, What do you have you to say? And by the way, why are you late? उसने अमीन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या कहना है और तुम क्यों लेट आए हो? Amin said, My lord, I had a plate of boiled beans in the house. Before coming here, I planted them in the garden so that I will have a good crop next year। अमीन ने कहा, मेरे आका, मेरे पास घर में उबले हुए फलियों की एक प्लेट थी। यहाँ आने से पहले मैंने बाग में उन्हें बो दिया ताकि अगले साल मेरे पास एक अच्छी फसल होगी। फूल, एक्सक्लेम द जज। बेवकूफ़, जज ने कहा। हाउ कैन बॉइल्ड बीन्स ग्रो इनटू एनीथिंग्स। उबली हुई फलियाँ कैसे किसी चीज़ में बढ़ सकती हैं या नशोनुमा पा सकती हैं या उग सकती हैं। अमीन रिप्लाइड, येस इंडीड माई लॉर्ड, एंड हाउ कैन बॉइल्ड एग्स हैच इनटू चिकन्स। अमीन ने जवाब दिया, जी सही मेरे आका, और कैसे उबले हुए अंडों में से चूज़े निकल सकते थे। एंड दैट्स हाउ अमीन वॉन हिज केस। और इस तरह अमीन ने अपना केस जीत लिया। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। 2 से 3 बार घर पे आप इसको अच्छे से रीड करें इस चैप्टर को विद उर्दू ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से मुतल्लिक जितनी एक्सरसाइज होगी वो सब करेंगे।